So let's start learning French. So French is a language, yeah, we will start with the basic, especially because for every language we need to know what are the consonants, how the foundation is laid. So French is a language that is really desirable these days for your immigration purposes. Even people are learning French ताकि वो multilingual हो सकें. You have very good opportunities after learning a new language wherever you are in the world. So in French, we have 20 consonants and 6 vowels, same as we have in English, but the pronunciation is different. And in French, gender plays a very important role as every noun have a different gender. And whenever we are learning, you have to keep in mind that, okay, this thing have this gender because it will help you later on the later stages. So if you talk about French alphabets and numbers, they are very similar as we learn in our English or in the basic maths, but the pronunciations are different. For number, we call it either numero or chiffre in French. For alphabets, there's a different pronunciation. I have made a slide for that. Like you can note down these pronunciations. I will just repeat the words or the pronunciation. You can note down in your notebooks, or I will share this slide later on. I will share the link so that you can note it down or make your own notes so you can learn it on lately. Like for ABC, it's A, B, C, D, A or U. It all depends. Some native speaker, they pronounce it as A, but you can also say it U. Whenever we learn from an Indian teacher, they always pronounce it as U. F, G, H, E, G, K or K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So are you clear with the pronunciation? I should repeat it again. तो बेसिकली जो भी लाइक सी और बी जो एंडिंग में ई से हो रहा है उसे हम से बे या से बोलेंगे, राइट? Yes. You will जब आप रिपीट करोगे बार बार तो इट विल बी ओके विद यू. धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस आपकी लाइक खुद का एक्सेंट होता है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू. जस्ट यू नीड टू नो कि दिस इज करेक्ट. मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी प्रोनाउंसिएशन के रिटन. Either you're comfortable in Hindi or English, you can just you can ask for the pronunciation anytime अगर confusion हो आपको तो. Okay. So we are moving to next slide. So learning French is not difficult. You all need to dedicate yourself. आपको सिर्फ time देना है and you can learn this language very easily. It will take time. Starting में लगेगा कि हाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, पर एक बार basic clear हो जाएगा, then it will be very okay for you. You can do it. French में you always have to take care about articles and genders. Even यहाँ पे articles vary करते हैं with the gender. Like if you see a picture of hat here, it's in French it's called chapeau. It's a here. UN is pronounced as a. In French, it means an, a hat, an hat, the hat. But हमें पता है कि H is the vowel in French. Okay? और जैसे इंग्लिश में H silent होता है, वैसे फ्रेंच में भी H silent होता है. So it's written a chapeau, a stylo, a livre, a crayon. Crayon is for pencil, a livre is for a book, a stylo is for pen, a chapeau is for hat. And they all have masculine gender. जेंडर का रोल आपको धीरे धीरे क्लियर होगा. अभी इट्स जस्ट स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा थोड़ा ही समझा रही हूँ. So like we usually read this quote, c'est la vie. This means this is the life. But can you observe the la here? It's because life is feminine. This is the life. Life is we, V-I-E. Generally in French, हम last की word pronounce नहीं करते. There are very few consonants or either it is जब next word हमारा vowel से start होता है तब हम connection करते हैं. French में there are 4 types of regular verbs and there are many irregular verbs. मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा regular verb का brief दूंगी. These are the verbs इनकी endings
ERREIROIR से होती है. लाइक our first verb is आले. You have to learn this. ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कॉन्जुगेशन डिफरेंट होती है हर एक प्रोनाउन के साथ. स्टार्ट धीरे धीरे जब हमारा बेसिक हमें वोकैब पता लग जाएगी, देन आई विल स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट. तब आपको धीरे धीरे सब क्लैरिटी होती जाएगी. सो आले इज मीन्स दैट टू गो, आबिते, टू लिव, parler, to speak, faire, to do, leave, to read, prendre, to take, venir, to come, choisir, to choose, dormir, to sleep. Avoir is can, voir is to see. इसकी 4 कैटेगरीज मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इनके 4 का डिफरेंट फॉर्मूला है टू कॉन्जुगेट करने का. कॉन्जुगेट मीन्स लाइक हम आई एम यू आर लिखते हैं, वैसे ही विद आले इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. हर एक वर्ब डिफरेंट कॉन्जुगेट होता है अलग प्रोनाउन के साथ. सो फ्रेंच लर्न करने के लिए हमें 5 की पॉइंट्स दिमाग में रखने, क्योंकि हमें वो हमेशा चाहिए होंगे वेन एवर वी मेक अ लाइन, मेक अ सेंटेंस और वी कन्वर्स. सबसे पहले इज द जेंडर. योर जेंडर विल डिपेंड कि कौन सा आर्टिकल लगना है. अगर वो फेमिनाइन है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल दैट वी विल डिस्कस ऑन लेटर स्टेज. Such as if like here I have given an example of vatir. Vatir means car. It is feminine, so it will be la fatir or in fatir. Next topic is vowel. There are 6 vowels in French, exception from English. They have 5. It's Y is added in this. That is in English by. Then there are 5 types of accents: agi, grave, circumflex, trema, and sedile. Slowly you will, when new words will be introduced to you, then you, because accents are very important. Not only they affect your pronunciation, but they also change the meaning of the word that we write in French. And they are inescapable. You have to learn the accents with the spellings. Lightening. Lightening is important. Whenever we write 2 vowels together, lightening comes. Lightening, I will tell you in later stages, because starting में सारे concepts clear नहीं कर सकती. 1 by 1 होगा तो आपके लिए भी easy रहेगा to grab everything. Okay. तो usually हम communication जो हमें French के लिए आता है, basically our purpose is step, right? Okay. Bharti, have you given a link to someone else also? नो आई थिंक वही जो ज्योत्सना उसमें है, शायद उनकी कोई और आईडी से वो आ रहे होंगे. Maybe. Let's make, उनसे बाद में पूछते हैं, मैंने इनको enter कर लिया. Okay. So basically, our motive is to do TEF, but there are many different career goals also related to French. You can be multilingual, you can work with international brands. French is not as easy we think, but with our dedication and practice, we can learn it. But इसके लिए बहुत strong base चाहिए. फर्स्ट डे से whenever you आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी टॉपिक में, वी नीड टू क्लियर इट फर्स्ट, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. ये नहीं कि वी जस्ट, क्योंकि एक बार एक चीज पाइल अप होने लग गई ना तो वो पाइल अप ही होती जाएगी. तो ऑन रेगुलर बेसिस मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी आफ्टर 2 वीक्स, क्योंकि तब तक मैं आपका सारा बेसिक जो आपको वीक्स, एबीसी वर्ड्स, बेसिक वोकैब सारी मतलब रिलेटेड टू डे टू डे यूसेज के कुछ सेंटेंसेस, वोकैबलरी, ये सब चीजें 1 बाय 1 हमें मिलेंगी. ताकि और जब भी आपने इनको नोट करना है तो अपनी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है उसमें नोट कर लेनी है. धीरे धीरे यू कैन मॉडिफाई इट विद योर ओन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड की डिफरेंट होगी. तो धीरे धीरे जब हम करेंगे तो आई विल टेल यू कि किस तरह 2 वॉयल्स और 2 वर्ड्स मिलके क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो व्हेनेवर यू रीडिंग अ वर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड कि ओके इस वर्ड की ये साउंड है, तो धीरे धीरे वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. ग्रामर टॉपिक्स बेसिकली इंग्लिश जैसे सेम है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, वो धीरे धीरे हम ऐड ऑन करते जाएंगे. और बाकी डिफरेंट स्लाइड्स में आपको जो भी हमारी क्लास में डिस्कस हुआ करेगी उसका लिंक आपको शेयर कर दिया करूँ, सो यू कैन रिपीट और रिवाइज एवरी टाइम. और एक कॉमन रूल हम इसमें यूज करेंगे कि आपने लिख के इसको करना है, जब भी आपको, जब 15 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, क्योंकि आपको वो बाद में आपको याद रहेगा. इट विल रजिस्टर इन योर माइंड व्हेन एवर यू राइट थिंग और न्यू वर्ड. स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट लेटर ऑन आपको ये चीज बहुत सही लगेगी, क्योंकि
वो वर्ड्स आपको इम्प्रिंट हो जाएंगे आपके माइंड में, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिखते अलग हैं, बोलते अलग है इसमें, क्योंकि लास्ट के जो वर्ड्स है फ्रेंच में प्रोनाउंस नहीं करते हैं. इफ आई हैव रिटन आले, इट्स एंड्स विद आर. इफ वी गो ऑन दिस साइड, it's ale, right? But in हम English में होते तो we would have pronounced it the R word, but French we will just pronounce till E, ale. Now it's like habite. H is silent in French. We will stop our pronunciation till R. Last words बिल्कुल भी pronounce नहीं किए जाते French में. So generally हमारी जो क्लास होगी वो स्टार्ट होगी with the words vocabulary, then हम grammar डिस्कस करेंगे